हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आप लोग सब कैसे हैं? होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम कॉमर्स का है, क्लास 12th को। उसके लिए मैं रिवीजन वीडियोस डाल रहा हूं। ये सारे जो वीडियोस होंगे वन शॉट वीडियोस होंगे, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी हेल्प करेंगे। तो होप सो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और सारे जितने भी जो वीडियोज आएंगे उनके थ्रू आप अपने नॉलेज को एनरिच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सारे कीवर्डिंग्स मैंने यहां लिखे हैं, तो जल्दी से गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा, जैसे हम कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं कि भी आज बारिश होने वाली है, दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। बट जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस। तो हम बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज द मीनिंग। इट इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस which lie outside the organization but which may affect the working of the business or the organization. So that is what called the meaning of the business environment. मैं repeat कर देता हूं, business environment includes all individuals and institutions which lie outside the organization and which may affect the working of the business. That is what called business environment. Now what are the features? Totality of external forces. वैसे कुछ फोर्सेस इंटरनल भी होती हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कंट्रोलेबल होती हैं। तो हम अभी फिलहाल जो बात करेंगे दे आर व्हाट एक्सटर्नल फोर्सेस which may affect the business from outside. नेक्स्ट इज जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल फोर्सेस भी हो सकते हैं जो ना केवल मेरी फर्म को अफेक्ट करेंगे, बाकी सारी फर्मों को भी अफेक्ट करेंगे। एंड जो स्पेसिफिक होंगे वो केवल मेरी फर्म को अफेक्ट करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो केवल मेरी फर्म को अफेक्ट करेंगे। देयर मे बी सम फैक्टर्स which will affect other firms also, that is general, and which will affect only my firm, that is what called specific. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं interrelatedness. That means one force which affect the another force. Say for example there is some kind of growing awareness about health, then there will be more demand for organic foods, there will be more demand for exercise and like gym. So that is what called one force affect the another force. Next is कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, नॉट सो इजी। टॉक अबाउट इट इज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स कीप ऑन चेंजिंग। कीप ऑन चेंजिंग मीन्स दैट द बिजनेस विल फेस वेरियस challenges daily. Next is uncertain. We can't say with certainty that what will happen in future, what kind of policy the government will bring, what kind of changes will come in the economic environment, in the legal and social environment. So we are not certain about, it can change anytime. Next is relative. अब relative का क्या मतलब है? Place to place it differs. The business environment of one country will definitely differ with the environment of other countries and other places. Non-controllable, it is not controllable. Say for example any kind of change in the government ruling or in the political ideology, if it changes, or there is some kind of change in the social environment or economic environment or the interest rates, fiscal policy, monetary policy, they are uncontrollable, outside the control of the concern. Say for example it is objective of the concern, or it may be power structure of the concern, it can be changed. But as far as external forces are concerned, they are outside the control of the business organization. Clear? तो ये आपके अभी जो मैंने डिस्कस किए वो क्या थे? फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ टॉक अबाउट द इंपोर्टेंस। अब जो पहला इंपोर्टेंस है दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका क्या मतलब है कि जितना जल्दी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके बिजनेस के लिए काफी फ्रूटफुल हो सकती है, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट, दैट इज व्हाट कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आपके जो एप्स हैं जिनके थ्रू आपका सामान आप तक पहुंचता है, तो जिसको सबसे पहले पता चला होगा कि भी हम ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं गुड्स की कस्टमर्स को, तो उनका बिजनेस चल पड़ा। या जैसे मान लीजिए स्विगी या जोमेटो जो हैं, इन लोगों ने सोचा कि रेस्टोरेंट से जो फूड है उसको कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाया जाए, तो दैट इज एक्चुअली फर्स्ट मोर एडवांटेज हु क्रिएटेड दैट आइडिया इन देयर माइंड। तो जिसको जितना जल्दी इंफॉर्मेशन मिली उतना जल्दी उसका बेनिफिट लिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड फर्स्ट मोर एडवांटेज। वार्निंग सिग्नल, अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल का क्या मतलब है कि जितना जल्दी आपको कोई वार्निंग मिली उतना जल्दी आप बच जाएंगे। से फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग वन प्रोडक्ट
इन ए पर्टिकुलर स्टेट एंड देन यू केम टू नो अबाउट वन न्यूज के भी वो सेम टाइप का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है नियर बाय स्टेट में वहां बैन हो गया है. नाउ इट्स ए वार्निंग फॉर यू कि भी हो ना हो आपके स्टेट में भी कल को बैन हो सकता है, तो यू कैन शिफ्ट योर प्रोडक्शन टू एनी अदर प्रोडक्ट. मतलब कोई और प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर लीजिए धीरे, आपके पास अभी टाइम है, आपके अभी स्टेट में बैन अभी हुआ नहीं है, तो यू हैव द टाइम. तो दैट इज व्हाट कॉल्ड वार्निंग सिग्नल. नेक्स्ट इज योर कस्टमर फोकस. अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को क्लोजली स्टडी करते हैं तो यू कैन फोकस ऑन योर बिजनेस अकॉर्डिंगली. आप अपने प्रोडक्ट पे, उसकी क्वालिटी पे आप फोकस कर सकते हैं, कस्टमर्स की नीड्स पे फोकस कर सकते हैं. तो व्हेन यू स्टडी द एनवायरमेंट यू सी व्हाट आर द चेंजेस कमिंग इन द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क. नेक्स्ट इज कोपिंग विद द चेंज. कोपिंग विद द चेंज का मतलब है कि अगर आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ आप अपने आप को कोप अप कर सकते हैं. आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. पब्लिक इमेज, अब आपकी इमेज भी बेटर होगी. आप देखिए जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, उनकी जो वर्किंग है वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग काफी हद तक चेंज होती है. तो देखिए कि उनकी इमेज भी काफी हद तक बेटर रहती है. उनकी जो कस्टमर केयर या जो उनकी कस्टमर्स को सर्विसेज हैं वो दे आर मच मच बेटर देन अदर फर्म्स विच आर नॉट वर्किंग केयरफुली ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लोजली स्टडी नहीं करते हैं तो उनकी इमेज बेटर नहीं होगी. और जो कंसर्न्स हाईली अपडेटेड रहती हैं, देखिए अपडेटेड वही रहेंगी जो एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलती हैं. नेक्स्ट, आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुले से आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने प्लान्स में चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. अगर कोई चेंज आता है एनवायरनमेंट में तो आप अकॉर्डिंगली आप अपनी पॉलिसी भी चेंज कर सकते हैं. ये भी एक एडवांटेज है. Next is your continuous learning. Doesn't mean that you studied the environment today, tomorrow it is not required. It is a continuous learning because the business environment continuously changes. So that's why we have to continuously, we have to have a close watch on the business environment. Next, we will discuss the dimensions of the business environment. It is micro and macro. Micro is direct influence on the business. That is also called direct section environment or task environment. So it has direct influence on the business. So it may be internal or external. When we talk about internal, it is inside the concern. Say company's culture, company's mission, company's objective, company's power structure, that who are at the top, like CEO, like managing director, board of directors, then departmental heads, deputy departmental heads, then deputy departmental heads, then talk about supervisor, foreman, etc. That is power structure. Brand equity, like what kind of a brand image they have created among the customers. That is all called what? Internal environment, which affect the business directly. Talk about external, micro external. No doubt it is outside the concern, like customers, competitors, suppliers, middlemen, financiers, public. But somehow it can be controlled up to a certain level after some time. So like customers, now company, they have to take care about the expectations of the customers, what kind of expectations they have, and they have to fulfill those expectations. Otherwise the company will directly be badly affected if they are not concerning their customers. They haven't opened one customer care where the customers can call and they can file a complaint if they have any kind of problem. So if they have created such kind of a platform, then they will feel satisfied that there is someone who is listening their complaints. So customers, they affect the business directly. Competitors, like the particular competitor, we have to see what are their strategies, how they are doing, how they are working, because that can also affect our working. Then our suppliers, who supply us raw material, middlemen who are distributing our goods, who are helping us to send our goods to the ultimate customer, financiers who has given us loan, or the public, it may be like the NGOs and general public. Okay, they also affect the business. So they are no doubt outside the concern, but they directly influence the business. So we have to take care about these also, but they are specific in nature because they affect only my firm. Okay, now we talk about macro environment. Macro environment is basically the environment which is quite remote to the concern, but they may influence the business working, but they will not only affect the working of my firm, that can affect the working of other firms also. That is general. That, as I told, that is specific and general. So specific in the sense they are specific because they will affect only my firm, direct influence, that will influence, but it will influence indirectly. That is what called general. So when we talk about different components of the macro environment, because they all are
what we say remote to the concern, and they will not affect directly, they will affect indirectly. Economic environment, social, technological, political and legal. So talk about economic environment. Economic environment like factors concerning production and distribution of wealth. So like economic system, like it may be a capitalist economy, socialist or mixed economy. Like monetary policy run by the central bank of the country, and the like the fiscal policy, the policy run by the through the budget of the government, and the GDP, gross domestic product, per capita income, your interest rate, very important. Interest rate if reduces, it will reduce the cost of capital. So you can do more investment, you can take loan from the bank and you can start your venture when the interest rates comes down. So the cost of capital will definitely be reduced. Disposable income, say if the increase in the disposable income, so the demand for goods will definitely increase. Next is social environment, which also affect the business, like population, age, custom, traditions, lifestyle, that will affect the business. They are all social and the cultural forces which affect the business. You can even ask for, sir, what are the examples for the social environment? So like there are some examples, say for example, talk about Diwali. So you will ask, sir, what kind of demand will be there on that day? It will not be like demand for colors, it will be demand for lights, demand for crackers, demand for sweets. So that depends on that particular custom, or it may be the lifestyle of a particular area. Say in a particular area, like sari is the main fashion, but if you want to say that we will change it to the salwar suit, so it will not work. Why? Because that is the traditional custom of that place, that area, or the particular place where the maximum people are non-vegetarian, and you want to open one vegetarian hotel there, it will not work. So that is what called social environment. You have to concern about this because it will affect the working of the concern. Technological environment will also affect the business. The rate at which the technological changes are coming into the business, that will also affect. You can ask for, sir, what are the examples? So examples are, say for example, you are one company making cameras, and now the good cameras are coming in the mobile phones. So definitely that company making cameras will be badly affected. Okay, say one company was the market leader in the country, and they introduced one series, and which failed because of the competition. The another company introduced another series with which was quite user friendly. Say for example, you can take example of Nokia and Samsung. So Nokia introduced the Windows version and the Samsung introduced the Android version, which was quite user friendly. So the thing, the even the company don't know that which will be more favorable. So that technological aspect will can also influence the business concern. So technological environment you have to take care. Say for example, the particular business you are in, if that particular business, their technology has now outdated, now you have to shift to the new technology then. Next is political environment can also affect. That is what called a political ideology. Say there is one example in the books, if you will see, like in 1977, when the Janata Party government came into ruling, having the ideology of the Swadeshi, they asked the IBM, Coke and Pepsi to exit the country. Why? Because that was the political ideology that affected the business. Talk about like legal environment, like the rules and regulations, the framework within which the all business concerns has to work. That is what called legal environment. Like the liberalization, say like you know the LPG, liberalization, privatization, globalization, in 1991 in India, when the LPG was being introduced, so FDI became more easier for the country, like more foreign direct investment came into the country. And like the introduction of the GST by the country, like one nation one tax. So that is what all called legal environment which affect the business, and that is not specific, that is general. Not only my firm will be affected, other firms will also be affected. तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो काफी समझ में आएगा, काफी पसंद आएगा, आप लोगों के एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।